what I was doing. Okay. But the guy found my card, and he returned everything to me. Everything like the as whole it was. bag, yeah, nothing Okay. missing, everything. So I gave him some money. I was really happy about it, Okay. and it was a really good experience. I mean, there's lots of times where they don't take you where you want to go and stuff, but generally I think they're also just trying to make a living, Okay. and I'm really happy with that experience. And like I've been in Chennai also and it's really bad there. So Bangalore I think is good. Yeah, there are odd people who like bad will overcharge you, will say something who won't drop you where you want them to drop you. But that's just a few of them and I think it's a wrong example. Maybe I would have seen some 10,000 auto rickshaw drivers in my whole last 7 years life, right from Trivandrum, Cochin, Bangalore. All these guys have one thing in common. If you're good to them, they are good to you. In thousand of one man will be doing like that. One man will be doing for everyone will be naked. What means auto rickshaw is doing, auto rickshaw is doing. One man do theft. What will say, oh, auto rickshaw has been done for this thing. What we can do, I don't know exactly. We cannot have a general statement that everything is good and everything is. There will always be some black sheep will be there. Okay, but that number is very limited to 5%. Every department or every walk of life, I can say, has both good and bad this thing. Only thing is the percentage of good should be more than the percentage of bad. Okay, if you take that criteria, I think auto drivers in Bangalore are really good. लाइफ में हंसना चाहिए. जो आदमी हंसता नहीं है वो करेगा क्या? खुद समझना कि ही इज़ द गुड गाय, ये अच्छा आदमी है, उसको चलो 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, ऐसा सोचना. अब ऑलरेडी पहले से ही मांगने लगेंगे तो वो आदमी के मन में सोचेगा कि ही इज़ अ ब्लडी चीटर. ಈಗ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು, ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ರೌಡಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, ಕೊಲೆಗಡಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು. ಆ ಥರ ಏನಲ್ಲ. ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಟೋದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇವೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಟೋದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನಿರುವುದು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಾನಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏಕೆ, ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏಕೆ, ಆಡುವುದೆಲ್ಲ ಆಯಾಗಿ, ಆಡುವುದೆಲ್ಲ ಆಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸೇರುವುದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅರೆ ಒಂದೇ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ ಹಿರಿಯರ ಫಲವೋ, ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ ಹಿರಿಯರ ಫಲವೋ. किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव तो किसी की मोहब्बत. यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड है. मीटर डाउन 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 डाउन, ओ मीटर डाउन 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 है. मीटर डाउन 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 है. मीटर डाउन. कितना कितना काफी है किसको बोलो, उसके जितना अपनी किस्मत को ऐसे धो लो. कितना 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 काफी है किसको बोलो, उसके जितना अपनी किस्मत को ऐसे धो लो. सबका धर्म के कम न हो रकम, सारे सपनों में से होगा sound. Oh, meter down 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 down. Oh, meter down 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 down. Meter down 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 down. Oh, meter down. Give me some horns.
one experience I could say was this one time I was talking to an auto driver after this article came in the newspaper about how auto drivers are bad and how unsafe it is. And this auto driver was trying to tell me that, I mean, all of us are not unsafe. I mean, there are like more than a lack of autos in Bangalore. But still, if one guy commits a mistake, everyone is blamed. So I think this was a very revealing experience when I was actually talking to an auto driver, which many people don't. I mean, if you actually talk to them, we would know that they are just like us. It's not like all auto drivers are unsafe or something like that. It's just that everyone needs to talk to them and have that comfort level. I would say break your stereotypes. I mean, it's just no point blaming all the auto drivers as one guy molest someone or something. I mean, that's a very cliche argument. And that messes up a lot of things. I mean, we have to understand that they are people from struggling backgrounds and they need a livelihood, and we are facilitating their livelihood. And for the auto drivers, I have no particular message. They're just doing the job, so they continue doing that. தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு கருப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு பொறுப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு என் குழந்தை கூட வழி சொல்லும் அந்த பறவை கூட வழி சொல்லும் ஓ எனக்கு பாட்ட நிப்பாட்டு தம்பிக்கு நீயே வழி காட்டு அட எங்க ஊரு அந்த பக்கம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது வண்டி கட்டி கூட்டி போறடா கிளியே கிளியே கீக்கி கிளியே 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 கீக்கி கிளியே குயிலே குயிலே கூக்கு குயிலே அட கிளிதா நான் கூட என் மனச கூண்டில் அடைச்சாளே அட குயில்தா நான் கூட என்ன இதய கூட்டுல வச்சாளே காதல் நினைப்பில்ல நானும் கூட தான் காத்தில் பறக்கிறேன் கிளியே கிளியே கீக்கி கிளியே குயிலே குயிலே கூக்கு குயிலே